राधे राधे आप सभी को कृष्णा अर्पण चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए अब हम चैप्टर 6 सेक्शन 59 से सेक्शन 60 तक के प्रीलिम्स के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ए, हु हैज टेकन वो ऑफ साइलेंस gives evidence in writing in an open court. His evidence shall be deemed to be documentary evidence, circumstantial evidence, oral evidence और secondary evidence. तो आंसर क्या है? आंसर इज oral evidence. C. Next, contents of documents under section 59 can be proved by oral evidence, cannot be proved by oral evidence, may or may not be proved by oral evidence, can only be proved by oral evidence under the orders of the court. The answer is B, cannot be proved by oral evidence. Next, what is the nature of statement given in narco test? It is not an evidence, it is scientific evidence, it is an oral evidence, it is circumstantial evidence. Answer is C, it is an oral evidence. Next, which of the following statement is not correct? No fact of which the court will take notice need be proved. Next, facts admitted need not be proved. C, all facts and the contents of document may be proved by oral evidence. D, oral evidence must be direct. तो कौन सी स्टेटमेंट इनमें से फॉल्स है? आंसर इज सी, all facts and the contents of documents may be proved by oral evidence. Next, oral evidence is allowed only when it is given in the court, even if it is given either in the court or elsewhere, when it is given both in trial and investigation, when it is given before a police officer in investigation. तो आंसर इज A, only when it is given in court. Next, a witness who is unable to speak gives his evidence by writing in open court. Evidence so given shall be deemed to be oral evidence, documentary evidence, primary evidence और secondary evidence. तो आंसर क्या है? आंसर इज ओरल एविडेंस. एक ऐसा विटनेस जो गूंगा है, बोल नहीं सकता, या जिसने चुप रहने की शपथ ले ली है कि आज के बाद मैं कभी नहीं बोलूंगा, तो ऐसा विटनेस अगर राइटिंग में अपना एविडेंस कोर्ट में देता है तो ऐसे एविडेंस को हम ओरल एविडेंस ट्रीट करते हैं. ओके. नेक्स्ट, oral evidence under section 60 must in all cases be indirect, circumstantial, direct, may be presumed by court. The answer is C, direct. Next, oral evidence under section 60 of Indian Evidence Act may be direct only, hearsay, both A and B or either A or B. तो क्या आंसर है इसका? बताइए. वेरी गुड. आंसर इज A, direct only. Next, evidence given by witness who is dumb in writing is deemed as क्या माना जाएगा? अभी पढ़ के आए ना, बताइए, खुद से बताइए इसका आंसर. Next, a person who has taken solemn promise of silence gives evidence in writing in the open court. His evidence shall be deemed to be, बताइए. इस क्वेश्चन का आंसर भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. दोनों का आंसर करिए. नेक्स्ट, whether the contents of documents or electronic records can be proved by oral evidence. A, yes. B, no. C, at the discretion of the court. Or D, when the witness is an expert witness. तो क्या आंसर होगा जी इसका? आंसर इज B, no. Next, which one among the following statements according to Indian Evidence Act is correct? All facts can be proved by oral evidence. All facts except the contents of documents can be proved by oral evidence. All facts except the contents of documents or electronic records may be proved by oral evidence. All contents of documents can be proved by oral evidence. तो क्या आंसर होगा इसका? आंसर इज C. Next, oral evidence under section 60 must in all cases be indirect, circumstantial, direct और मे बी प्रिज्यूम बाय कोर्ट. तो इसका आंसर आप खुद से करके बताइए मेरे को. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट रिकॉग्नाइज द प्रिंसिपल दैट हियरसे एविडेंस इज नो एविडेंस? सेक्शन 60, 64, 91 और 92.
तो क्या आंसर है? आंसर इज ए, सेक्शन 60. नेक्स्ट, ए डेफ म्यूट्स एविडेंस मेड बाय राइटिंग इन ओपन कोर्ट शैल बी डीम्ड टू बी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, हियरसे एविडेंस, ओरल एविडेंस और प्राइमरी एविडेंस. आंसर इज सी, ओरल एविडेंस. अगेन सेम क्वेश्चन है. एन एविडेंस गिवन बाय डम विटनेस इन एन ओपन कोर्ट इज, बताइए कौन सा एविडेंस है. सिमिलरली एविडेंस गिवन बाय डम विटनेस इन द कोर्ट बाय राइटिंग और साइंस शैल बी डीम्ड टू बी ओरल एविडेंस. Which is not the main principle that underlies the law of evidence. The best evidence must be given in all cases. Evidence must be confined to the matter in issue. Hearsay evidence must not be admitted. Hearsay evidence must be admitted. तो आंसर क्या है? डी, hearsay evidence must be admitted. Next, which of the following statement is correct? Hearsay evidence become relevant: A, when it is ratified by admission or confession. B, when it comes under the ambit of section 6 of Indian Evidence Act. C, when it is mentioned in any public document or is presumed by the court. Or D, in all of the categories mentioned above. तो क्या आंसर है जी इसका? आंसर इज डी. नेक्स्ट, in which of the following cases hearsay evidence is not admissible? Statement of experts expressed in treatise if the author is dead or cannot be found. Where eyewitness told the facts to another person, statement of dead person. If the statement is of a deceased person when it relates to cause of his death. If the statement is part of the transaction in issue. तो क्या आंसर है इसका बताइए. वीडियो को पॉज करिए, खुद से एक बार मेंटल एक्सरसाइज करिए, उसके बाद वीडियो को प्ले करिए. तो आंसर इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डॉक्यूमेंट अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट. अभी के लिए आप इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हो. ओके, विल डू दैट क्वेश्चन लेटर. नेक्स्ट, इफ एक्स इज चार्ज विद वाइज मर्डर, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी हियरसे एविडेंस. जेड इन हिज एविडेंस स्टेट दैट आई सॉ एक्स स्टैबिंग वाई विद अ नाइफ. बी, एविडेंस ऑफ ए दैट जेड टोल्ड मी दैट ही हैड सीन एक्स स्टैबिंग वाई. सी, बोथ ए एंड बी. और डी, नन ऑफ द अबव. तो क्या है इसका आंसर? खुद से करिए, बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ हमने. बताइए इसका आंसर. Hearsay evidence is generally inadmissible. However, in which of the following cases it is admissible? Res gestae, admission and confession, dying declaration, all of these. तो बताइए एक्सेप्शन क्या है hearsay evidence का? Answer is all of the above. Which is not the main principle that underlies the law of evidence? Evidence must be confined to matter in issue. Hearsay evidence must not be admitted. Hearsay evidence must be admitted. The best evidence must be given in all cases. इस क्वेश्चन को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, खुद से आंसर करिए इसका आप. अंडर द लॉ ऑफ एविडेंस द टर्म हियरसे इज यूज्ड विद रेफरेंस टू व्हाट इज डन, रिटन, स्पोकन और ऑल ऑफ दीज. आंसर इज डी, ऑल ऑफ दीज. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? Hearsay evidence become relevant when it is ratified by admission or confession, when it comes under the ambit of section 6, when it is mentioned in any public document or is presumed by a court, or in all of the categories mentioned above. तो आंसर क्या है इसका? आंसर इज डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, द फादर ऑफ accused did not support the prosecution during the trial that he told the witness that his son accused had committed the murder. The statement of the witness would be in the nature of secondary evidence, hearsay evidence, res gestae or none of the above. तो आंसर क्या है? आंसर इज बी, hearsay evidence. Next, the details of an incident printed in a newspaper are categorized as documentary evidence, indirect evidence, hearsay evidence और relevant evidence. तो क्या आंसर है जी? आंसर इज सी, hearsay evidence. Next, which of the following is not a hearsay evidence? A, statement of police that on the basis of inquiry conducted by him that accused was not at home on the night of incident. B, report of the newspaper. C, report prepared on the basis of the information provided by the officer. Or D, statement of witnesses to prove relationship between the persons. सोचिए क्या होगा इसका आंसर, बताइए मेरे को. आंसर विल बी ए.
Next, the principle that a statement of facts contained in a newspaper is merely hearsay has recently been repeated by the Supreme Court in Joseph M. versus T.S. John. B. Next, the question is whether A assaulted B. C deposed that he heard A say to D, B wrote a letter accusing me of theft, and I will be revenge on him. No evidence is given about the letter. Is the statement made by A to D relevant and whether court can permit C to give evidence on it? बताइए क्या आंसर होगा इसका? आंसर विल बी A. No, it is only hearsay evidence. Next question. A informs B that he had heard from X that Z has committed murder of C few days ago. Evidence of B, when examined as a witness in court, would be considered as direct evidence, hearsay evidence, circumstantial evidence और expert evidence. तो आंसर क्या होगा? आंसर इज बी, hearsay evidence. ओके, अब चलिए सेक्शन 59 से रिलेटेड मेंस के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. All facts except the contents of document may be proved by oral evidence, which in all cases must be direct. Discuss in brief. Second, oral evidence must in all cases be direct. Comment. Hearsay evidence is not admissible. Has this rule any exceptions? Or hearsay evidence is not admissible. Explain. What are the exceptions to this general rule? Or hearsay evidence is no evidence. Explain and state the exceptions. तो ये थे हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चन. आपको इन क्वेश्चन को एक बार नहीं, दो बार नहीं, कम से कम 3 बार रिवाइज करना है, जिससे सारे के सारे क्वेश्चन आंसर आपके माइंड में अच्छे से सेट हो जाएं. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. जय हिंद, जय भारत.